Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on the following three numbers on 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. Do remember to prefix 011 if you are calling us from outside Delhi. I am Ishan Mittal and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. नमस्कार, आरती खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर सीधे फोन कर सकते हैं 23717106 और 23314444। हमारा तीसरा नंबर है 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीटी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेंद्र कुमार। धीरेंद्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं ईशान मित्तल। Foreign investors pump in nearly 2,000 crore rupees into the Indian debt market in just 3 sessions in November. International gold prices fell for the first time in 4 weeks, just below $2,000 per ounce, and global crude oil prices declined for the second straight week. Both Brent and US crude shed 6% this week. नवंबर में 3 दिनों के अंदर ही विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में लगभग 2,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य 4 हफ्तों में पहली बार $2,000 प्रति औंस से थोड़ा नीचे दर्ज किया गया और कच्चे तेल के मूल्यों में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड और यूएस क्रूड कच्चे तेल के मूल्यों में इस सप्ताह 6% से अधिक की गिरावट दिखाई दी। और आज की पहली खबर, नवंबर में 3 दिनों के अंदर ही विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में लगभग 2,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। अक्टूबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने ऋण बाजार में 6,381 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जबकि इस महीने की शुरुआत में ही 1,984 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। दूसरी ओर विदेशी निवेशक इसी अवधि में इक्विटी बाजारों से 3,400 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। विदेशी निवेशकों ने इक्विटी बाजारों से सितंबर में 14,767 करोड़ रुपए और अक्टूबर में 24,548 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। इससे पहले मार्च से अगस्त के 6 महीनों में विदेशी निवेशक भारतीय इक्विटी में लगातार खरीदारी कर रहे थे। इन 6 महीनों में विदेशी निवेशकों ने 1,74,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। And we have our first caller, Sanjay from Mumbai. Sanjay ji, please ask your question. Sanjay ji. Hello. Hi, Sanjay. It seems we have lost our caller. Until then, Dhiren ji, I had a question for you. That SEBI has directed mutual funds to show that only the 10-year CAGR in their ads. And it said that there's some kind of misguidance that happens when mutual funds advertise how their returns have been. How can you guide investors to educate themselves better about how to read the CAGRs and make an informed choice? No, the SEBI rule is not that, in mutual funds should give only 10-year return. There has always been rules about how mutual funds should report their performance numbers. And it should be done at least for a minimum period of 1 year and more. And there is a methodology explained that what they can claim, what they will not. But most importantly, investors should not forget the statutory
disclaimer that comes with mutual fund, that mutual funds are subject to market risk, and whatever return that the fund has achieved may not be able to achieve. But more importantly, one has to think that what is this? How it is useful? What is the meaning of the past performance that we see? One is that past performance that you see may not be achievable. Past performance is a function of the context, the situation. You know, in COVID in March 2020, the market went down by something like 30%, and then thereafter it went up by nearly 70-80% from the lows over the next 12 months. Now that doesn't mean anything for investor. If somebody if somebody would have looked at in March 2021 the exceptional performance of mutual fund in the past 1 year, that was not to be achieved simply because before that the market fell. So it's understanding the context is very important. I think setting investors' expectation or investors setting their own expectation is just as important. And it is important to understand that don't get carried by, don't get attracted to, particularly on these times. Whenever you are getting attracted to a mutual fund based on its past performance, take it to your heart that it will not be repeated, and it will be, don't think of the statutory disclaimer like something which will not happen to you. People tend to expect that it will carry on. It will not. And I think it's important to understand that what to expect from different categories of funds. What should be the long-term expectation from equity? What should be the expectation from concentrated long-term equity or the narrow categories of equity fund? And the 10-year performance that you see on Value Research Online or anywhere else is something which definitely gives you a character. But more importantly, more than the returns, every time you see the return, also look at the worst-case situation in that time period, and that will looking at both of it together will give you a true picture. और इस बीच दिल्ली से हमारे श्रोता योगेश हमसे जुड़ चुके हैं। योगेश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल जो है एक तो ये है कि एसेट लेवल पे कितना डाइवर्सिफिकेशन काफी है, क्योंकि अगर सिर्फ हम फिक्स इनकम एसेट्स में और सिर्फ इक्विटी में करते हैं तो क्या ये अपने आप में काफी है एसेट क्लास लेवल पे। और सर एक छोटा सवाल था कि हमारे पास इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं और फिक्स इनकम एसेट्स के हम पीपीएफ का इस्तेमाल कर रहे थे, पर उसमें जो अभी हाल ही में हमें दिक्कत फेस हुई है वो रीबैलेंसिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है, उससे निकालना है, उसमें निवेश भी इस पे कैप है, तो उसके अलावा इसका कोई सब्स्टिट्यूट जो हम डाल सके फिक्स इनकम एसेट्स में। जी हाँ, मुझे लगता है कि किसी भी निवेशक के लिए फिक्स इनकम ही कैटेगरी है, यही एसेट क्लास आपके पास मोस्टली होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से चूंकि गोल्ड का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और खासकर आज के दिन पिछले एक साल में सोना 20% बढ़ा है, तो लोगों को लगता है कि सोना सचमुच में सोना है, पर सोना नहीं है। क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल की स्थिति देखेंगे तो पिछले 10 साल में सोना का सालाना रिटर्न 6% रहा है। अगर आप पिछले 30-35 साल का देखेंगे, जैसा कि आप सेंसेक्स का जानते हैं कि 30-35 साल में सेंसेक्स की शुरुआत 100 पॉइंट्स पे हुई थी और आज के दिन ये 60,000 पार कर चुका था। तो इस तरह की वृद्धि आपको महंगाई को बीट करने वाला, फिक्स्ड इनकम को बीट करने वाला रिटर्न जो आपको इक्विटी में मिलता है, और ये जो पिछले 30-35 साल का इक्विटी का जो रिटर्न है, इस पूरी अवधि में पूरा देश का कायाकल्प हो गया। हमारा देश लिबरलाइज हो गया, कई लड़ाइयां हो गई, कई बार ऐसा लग रहा था कि दुनिया डूब रहा है, आर्थिक व्यवस्था बैठ जाएगी। एक रेगुलेटेड इकोनॉमी से हम एक फ्री इकोनॉमी की तरफ हम बढ़े हैं। उसके बावजूद बहुत सारी कंपनियां जो 50 साल पहले 30 साल पहले एग्जिस्ट करती थी वो बंद हो गई हैं। सेंसेक्स की जो करीब आधी कंपनियां अब बिजनेस में नहीं है और सेंसेक्स का भाग भी नहीं है। इसके बावजूद, इतने बड़े चर्न के बावजूद सेंसेक्स का प्रदर्शन ऐसा है, तो नहीं भूलना चाहिए। और उसकी तुलना में सोना आपका पैसा पूरी तरह डूबने से बचाता है, और खासकर जब दुनिया में बड़ी और अस्थिरता दिखती है तब सोना बच पाया है। और पिछले एक साल में अच्छे रिटर्न की वजह से बहुत सारे लोग आकर्षित हो रहे हैं मल्टी एसेट और इसकी वजह से की तरह के फंड में। इसको आप सेफली इग्नोर कर सकते हैं अगर आप अपने 10-15-20 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। और आपका जो दूसरा सवाल था कि फिक्स्ड इनकम के बारे में क्या करना चाहिए, लगाया हुआ पैसा, पीपीएफ अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे लिमिट है कि आप कितना लगा सकते हैं
और इससे लगाया हुआ रिटर्न भी काफी इंटरेस्टिंग, काफी यूजफुल है, क्योंकि इससे मिलने, ये अकेला एक फिक्स्ड इनकम एवेन्यू है जिससे मिलने वाला रिटर्न इन ब्याज टैक्स फ्री होता है। लेकिन अधिकतर पैसा चाहे जितना संभव हो लगाइए, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जहां पे आप कुछ एसेट एलोकेशन अगर बदलना हो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए एक या दो अच्छे शॉर्ट टर्म डेट फंड का चुनाव करें। यहाँ पे भारी उतार चढ़ाव नहीं दिखता है, पैसा आपका पूरी तरह कभी नहीं डूबता है, और वही आप अपना फ्लेक्सिबल एलोकेशन रखें। And we have our next caller, Vikas from Kolkata. Vikas, please ask your question. ये नमस्ते मार्केट मंत्र। जी, सवाल पूछें। SBI कॉन्ट्रा फंड 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और इस वोलाटाइल मार्केट में कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़ा थोड़ा करके। नमस्ते जी। SBI कॉन्ट्रा फंड एक अच्छा फंड है। पिछले 10 साल में आपने देखा होगा कि सारे उथल पुथल के बावजूद भी इसका प्रदर्शन बहुत जबरदस्त रहा है, और खासकर आज के दिन जहाँ पे इस करीब करीब 18% का सालाना रिटर्न आपको पिछले 10 साल में मिला है। तो ये एक अच्छा फंड है 10 साल के लिए ग्रेजुअली लगाने के लिए, SIP लगाने के लिए। और जो आपका अंडरस्टैंडिंग है कि आज के वॉलेटाइल बाजार में नहीं है, बाजार हमेशा वॉलेटाइल रहता है, तो इस तरह के एक फंड में पैसा लगाइए और एक और कोई दूसरे अच्छे ग्रोथ फंड का चुनाव कीजिए। 2 फंड मुझे लगता है आपको एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन देता है। स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन, हाँ, नैरो कैटेगरी में मत लगाइए, क्योंकि जो स्मॉल कैप है, मिड कैप, वहां पे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन वहां उतार चढ़ाव ज्यादा दिखेगा, और बाजार के अच्छे भाग का आपको एक्सपोजर मिलता है इस तरह के फंड में पैसा लगाने से। तो एक किसी दूसरी फंड कंपनी के ग्रोथ फंड का चुनाव करें। SBI कॉन्ट्रा अच्छा फंड है, इसमें जरूर अपना निवेश जारी रखें। And we have our next caller. Sorry, we have our next caller from Kolkata. जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी जी, जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए। ये जो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, इसमें क्या करना पड़ेगा? जी अमरीश जी, इनका प्रश्न नहीं, दोहराएं। ये हाँ, थोड़ा अब क्या आप एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएंगे? हेलो जी, सवाल एक बार फिर से दोहराइए। जो इन्वेस्ट करते हैं जी, 5 साल तक के लिए, इसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, कहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं आप? ये जैसे इन्वेस्ट, जैसे म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगता है, जी, उसको मतलब 5 साल में। ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और 5 साल निवेश करते हैं, तो आपको पहला म्यूचुअल फंड जो विकल्प है निवेश का, वो बहुत तरीके के विकल्प हैं। कुछ फंड है जो कि कुछ दिनों के लिए पैसा लगाने के लिए उचित है। कुछ फंड है जिसमें आप कुछ महीने और या साल के लिए पैसा लगाएं, तो वहां पे नुकसान की संभावना काफी कम हो जाती है। कुछ फंड जिसमें आप पैसा लगाएं तो उसमें लंबे समय में पैसा आपका काफी बढ़ता है, पर कम समय में वो नुकसानदेह हो सकता है, वो है इक्विटी फंड। अगर आप 5 साल के लिए लगा रहे हैं, तो मेरी सलाह है कि आपको एक ऐसे फंड में पैसा लगाना चाहिए जिसका अधिकतर भाग डेट में लगता है, और थोड़ा सा, और खासकर अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो सीधे तौर पे इक्विटी में मत लगाइए, और एक साथ पैसा अगर लगाना है तो आमतौर पे 5 साल की अवधि के लिए आपको किसी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाना चाहिए, जहां पे नुकसान की संभावना काफी कम हो जाती है। बाजार गिरता है तो यहाँ पे पैसा आपका डूबता नहीं है। और अगर आप धीरे धीरे पैसा लगा रहे हैं, तब किसी आप अग्रेसिव इक्विटी फंड में भी पैसा लगा सकते हैं, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में भी पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे पैसा लगाते आपका रिस्क काफी कम हो जाता है। और 4-5 साल के लिए आप इक्विटी में भी लगा सकते हैं, बशर्ते कि आप वो धीरे धीरे लगाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको खाली एक बात की चिंता करनी चाहिए कि आपके पैसा लगाने के बाद कभी भारी गिरावट आए तो आपका पैसा बहुत रफ्तार से नहीं गिरे, जिसमें कि आप डर के मारे पैसा निकाल लीजिए और फिर कभी ना लगाइए। And we have our next caller from Mumbai, Pankaj. Pankaj ji, please ask your question. Hi, good evening. Yeah. I have 2 questions. One is, if you want to buy mutual funds from directly the mutual fund versus say a third party application, how is it different, and are there the charges different? Secondly, in the long run, if I want to invest in a mutual fund, what would you feel is a good return
for say 5+ years, per year returns is 20%, 25% good for any mutual funds? Thank you. Okay. Investing in mutual fund is possible to invest directly through a fund company at their website or through a third party act. In fact, it is now mandated by SEBI, the stock market regulator, the regulator of mutual fund as well, that every mutual fund should come in two formats. One which is sold through any intermediary called regular plan, and the other which is sold through an intermediary or a distributor, which is and the regular plan has a provision of commission to be paid to him, to the intermediary by the fund company. And other is the direct plan, where the expenses are lower to the extent of the commission paid to that intermediary, and the expenses are lower, so your returns are little higher. And it is possible to invest in. It is possible to invest in any open-end fund directly at the fund company's website. Now there are fintechs which enable you to invest, and they have superior interfaces, or they make it easier, and they don't make money when you invest. But at the same time, the design of mutual fund, the way you invest, the way the whole thing happens, has become very secure. In fact, the first level of security is that the money investing in a mutual fund can happen only through a bank, and only through a bank of an individual whose bank account is validated, and that investment must be in his name. So if I am Dhirendra Kumar, and an investment has to be made, and if the money comes from Dhirendra Kumar's bank account only, then only Dhirendra Kumar can invest. Dhirendra Kumar cannot invest for Sanjeev Kumar or anybody else. So that is one. Second is that because bank account is mandatory, any redemption, any money which has to be withdrawn must come back to my bank account only. So that's the second level of safety. Third is that in between, when my bank account is debited, the money never goes to anybody else. It either goes to the Stock Exchange Clearing Corporation or the mutual fund company's bank account directly. There is no intermediary in between in whose bank account the money can be there, even in the transit. So these are the safety mechanisms. Now the important thing is that these fintechs don't make money, and what if they fail? If they fail, your money is reasonably safe. The reason is that all the back end, everything happens at a registrar there, and even if a fintech closes down, and it has happened, there are fintechs which have closed down, and your money remains same. You can actually sell it anytime, you buy more, or most of your transactions can carry on. Of course, you will have to change your fintech or the front end, and you will have to go elsewhere. But there is absolutely no compromise on the safety of your investment. Now, talking about what is the kind of return that you should expect over the next 5 years, let me give you some numbers for you to comprehend. And this is purely indicative. Remember that these numbers will not be repeated, but plus minus 20% is something which is reasonable to expect. That you will not get these exact round numbers. But last 10 years, small cap returns have been able to give a return of 22% annualized. In the last 5 years, it is similar, 21.99. Technology funds have been able to deliver 20% over the last 5 years and annualized. But mind you, last 1 year, they are up 12%, but in the last 3 months, they are down 2%. So it comes with all kind of extreme generations. The large cap fund have been able to deliver 13%. So my expectation will be from a multi-cap fund, a kind of fund which we keep suggesting all the time that investors should ideally invest in multi-cap funds which invest in all kind of securities. Here the investment, the return is little over the large cap or close to the large cap category, 14-15%. Last 3 years they are up about 20% annualized. And then you have a wide variety of hybrid funds. The aggressive hybrid funds have also been able to deliver 8%, 12%, 11%. I will tell you what the realistic expectation of return is. I think a good fund, when you invest for the long term, whether it be a hybrid fund or an equity fund, don't get too greedy. If you are able to beat inflation by a wide margin, if you are able to beat fixed income return by a modest margin, that should be good enough. And make sure that you are comfortable with a category of fund where the ups and downs don't scare you to drive you out of that investment level.
और मुंबई से हमारे श्रोता संजय लाइन पे हैं। संजय जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। Sir, in Investors Hangout program on 29 September 23, title is Should you sell your small cap funds? You said, sir, that small caps are overvalued, highly overvalued, and one should be cautious about this segment. But I checked on BSE India website that P ratio on 29 September 23 was 29.65 only, and it was around 10 years average only. So then how it becomes overvalued, please clarify. And if I am seeing on any wrong website, please tell me on what is the right website on which I should check this. No, I would say that small caps are expensive, and some of the small cap stocks which are driving it, and if you look at the dynamics of small cap funds invest in smaller companies where the liquidity might be lower. As you know that more and more investors are investing in mutual funds through SIP, and because small cap funds have given the best performance, many investors are beginning to invest in mutual fund, and they are investing in small cap because recently they have done very well. And just see the last 1 year, it is the best performing category simply because close to being best, because it has given about 26.4% last 1 year. So investors are putting money and fund, and the averages don't mean much in small cap. If you look at the kind of stock that these mutual funds have invested, they are investing in stocks where the prices have gone up, and their P ratio could well be 50, 70, 80, and they're small companies. If they are faced with a exodus, if they are faced with a redemption, if a lot of investors pull out at one go, some of these small caps actually crumble very badly. And that is something which many investors have not witnessed so far. Many new investors have not seen the kind of decline these funds face. One should not forget that in 2008 financial crisis, the fall that happened thereafter, the small cap funds fell by nearly 70%. Imagine your 100 rupee getting reduced to 30 rupees. That is quite scary. And that was once again a situation where many new investors investing got scared, and then it took very long for it to recover. Small caps have been able to deliver great returns with extreme volatile movements, and they are expensive if you go by a narrow set of small caps which are attracting the kind of money. Averages don't mean much, because even if you look at large cap PE ratio, it does not look very expensive, but very sense the place where mutual funds are investing is not very comforting. And moving on to our next news item, gold in international markets fell for the first week in nearly a month as the safe haven rally cooled. Spot gold prices declined 1% during the week to end at $1,999.20 per ounce, just short of the $2,000 mark hit last month on escalating tensions in the Middle East. Silver prices declined 0.6% for the second straight week to end at $22.64 per ounce. On to our third news item, global crude oil prices declined for the second straight week on easing tensions in the Middle East, while jobs data raised expectations the US Fed Reserve could be done hiking interest rates in the biggest oil-consuming economy. Brent crude futures declined over 6% during the week to end at $84.89 per barrel. US crude also fell 6% to end the week at $80.51 a barrel. Hezbollah leader Saeed Hassan Nasrallah, speaking for the first time since the Israel-Hamas war erupted, warned on Friday that a wider conflict in the Middle East was possible, but did not commit to opening another front on Israel's border with Lebanon. US job growth slowed more than expected in October, official data showed, while wage inflation cooled, pointing to an easing in labor market conditions. Data bolstered the view that Fed Reserve need not raise interest rates further, and Fed held interest rates steady this week while the Bank of England kept rates at a 15-year peak, supporting oil prices as some risk appetite returned to markets. Dhiren,
this is the festive week, and markets could be, I mean, despite whatever is happening in the global scenario, markets may be upbeat. Any advice to investors, especially with respect to mutual funds, because Diwali season is coming, it's the season of worship of goddess of wealth. Any new resolutions that people can take with respect to MF investment? Yeah, make sure that, I think look at it as an auspicious occasion where, in our religious framework or the cultural framework, it is linked to the goddess of wealth and well-being. So look at it only as that and, spend some money. Be careful. Make sure that, you don't conduct yourself in a manner that Lakshmi goes away. Don't work on anything which is linked to Diwali, Holi or any such thing or any occasion. Because most of the financial plan which individuals should have should be irrespective of, it should be a plan which does not change with the weather, with the condition, with your context. It should change because the biggest driver of a financial plan, of your approach, of your outlook is your needs. When will you retire? When will your child go to college? When do you intend to buy your house? When do you intend to retire and go back home if you don't want to live in a city or at the place of your work? Those are, I think, very material thing and has a lasting impact. How much of your money should be in equity? How close you are to your retirement? I think these are more significant issues which investors should worry about and think about and prepare themselves for than any tactical thinking around Diwali, Holi or union budget or any such occasion. धीरेन्द्र, अब जो विदेशी निवेशकों का जो जिस तरह का रुझान है भारतीय बाज़ारों में वो देखें कि लगातार इक्विटी से निवेशक भाग रहे हैं और पिछले 2 महीने की ही हम फिगर्स देखें और डेट बाज़ार में काफ़ी पैसा डाल रहे हैं, तो ये जो जिस तरह का ट्रेंड है इन्वेस्टमेंट का, इसका म्यूचुअल फंड सेक्टर पर किस तरह का असर आपको दिखाई देता है? हमने देखा है कि इसका असर शॉर्ट टर्म में पड़ता है, लॉन्ग टर्म में इसका असर नहीं पड़ता है। विदेशी निवेशक अगर लगातार अपना पैसा निकालते जाएंगे और ऐसे निकालेंगे कि कभी उनको दोबारा आना ही नहीं होगा, तो हमारे बाजार के लिए वो बड़ा नुकसानदेह है। लेकिन विदेशी निवेशकों का बाजार में आना और जाना काफी नियमित बात है। पिछले 1-1.5 साल से, अगर आप 2 साल में देखें तो पिछले 2 महीने में विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाला है। उसके पहले 1 साल तक लोग लगातार लगा रहे थे और उसके पहले 1-1.5 साल का ऐसा समय था जिसमें विदेशी निवेशक लगातार लेकिन धीरे धीरे अपना पैसा निकाल रहे थे और अपना बाजार बिल्कुल भी नहीं हिला था या गिरा था, क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो निवेश है वो उनके निकालने के रफ्तार से या दर से ज्यादा थी। अभी भी स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। अभी भी करीब 10-15% म्यूचुअल फंड का पैसा ऐसा है जो कि लिक्विड है, कभी भी म्यूचुअल फंड धीरे धीरे लगाएंगे। और विदेशी निवेशकों का आना जाना बहुत कारणों से होता है। कुछ विदेशी निवेशकों का ऐसा भाग है जो कि जब बाजार में कोई बदलाव आता है तो उस पर वो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, वो पैसा निकालता है। लेकिन वो निकालता है इस तरह से नहीं, क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है कि भले ही विदेशी निवेशक निकाल रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के बाजारों में अगर कोई अट्रैक्टिव बाजार है जहाँ पे अभी भी इस तरह का ग्रोथ दिख रहा है, में दिख रहा है, तो वहाँ विदेशी बाजार का अभी भी रुझान बना हुआ है। जी धीरेन्द्र जी, अब चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका। Before we close, a reminder of the headlines. Foreign investors pump in nearly 2,000 crore rupees into the Indian debt market in just 3 sessions in November. Indian gold prices fell for the first time in 4 weeks, just below $2,000 per ounce. Global crude oil prices declined for second straight week. Both Brent and US crude shed 6%. That's it in this edition, Market Mantra. This is Akashvani. The news